Assalamu alaikum, Tanzila. It's a pleasure having you today with us at the Happiness Summit. I'll give a brief introduction to our audience. Tanzila Khan is a serial entrepreneur, an activist, and a public speaker, and delivers topics on various topics such as unleashing creativity, overcoming barriers, and inclusion within businesses. Tanzila graduated with a master's degree in entrepreneurship from Uppsala University, Sweden. She founded her organization by the name of I Wish to develop solutions for inclusion. So far, she has trained more than 8,000 people across 19 countries through her NGO, Creative Valley. Her other initiatives are Amal Clooney award-winning venture, girlythings.pk, Whoopie Town, and a board game which just came out a few months ago, a wonderful initiative, and Fruit Chart. So Fruit Chart is an award-winning short film which she made on disability. Wow, this is, mashallah, such an exhaustive list, Tanzila. You have achieved so much in life, nationally as well as internationally. Tell us, Tanzila, what was the driving force or that spark in your life which instilled the motivation to do so much for the society? Thank you, Sabar, for having me, and assalamu alaikum to everyone who is watching us. I think ये सवाल बहुत interesting है, बहुत reflective है, because if I ask myself, I do think कि मैं थोड़ी out of place अपने आप को feel करती थी in society, so you tend to start compensating for what you don't have. So initially things start from there. लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, आप realize करते हैं, wait a minute, you have power, and this power can be used for something good. तो फिर मैंने कुछ रूल्स अपनी लाइफ में सेट किए. एक तो ये कि आई डिसाइडेड कि जिस एरिया में कुछ नहीं हो रहा होगा, आई विल ट्राई टू पुट माई माइंड देयर. मैं वो एक जो कहते हैं ना कि एक वॉक थ्रू पाथवे है लाइफ का, आई विल नॉट फॉलो दैट बिकॉज ऑलरेडी समवन इज डूइंग दैट, दे हैव फॉलोड थ्रू, सो आई विल डू ऑल दीज प्रोजेक्ट्स. तो जितना भी अभी आप लिस्ट डाउन कर रही थी, आई वाज लाइक ये कितना it's in every direction. There's also content, there's also a board game, then there's cause-based ventures like girly things. वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि I don't see my visibility there. I don't see people with disabilities or women, Muslim women, hijab wearing women, all these identities that I carry. मुझे उसमें visibility नहीं दिखती. And there's a lot of peace when it comes to purpose. जब आपकी लाइफ में purpose मिला आपको, सुकून भी उसी के साथ मिलता है. तो आई लर्न दैट कि व्हेन आई फिक्स दिस पर्पस कि ओके मेरी टांगें नहीं है लेकिन मैं हर जगह टांग फंसाऊंगी अपनी जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा. आई फाउंड माय पर्पस एंड आई थिंक दैट वाज माय ड्राइविंग फोर्स. क्योंकि आज हम दुनिया का आलमी खुशी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो फूल और जो खुशी आपको इन कोशिशों से हासिल हुई वो हमसे शेयर कीजिए. आई थिंक एक लाजवाब लम्हा आपकी ज़िंदगी में वो होता है जब आप किसी से रैंडमली किसी मॉल में या किसी कैफ़े में मिलें और वो आपसे सिर्फ इतना बोलते कि फ़लाने दिन आपने कोई एक बात बोली थी, वो मेरे दिल को लग गई, उसको मैंने फॉलो किया और आज मुझे ये मकाम हासिल है. तो आपके अपनी क्या मंजिल है, आपके अपने क्या मकाम है, अचीवमेंट्स है, आपको याद नहीं रहता. और बस आप उस इंसान की बात सुन के इतना खो जाते हैं कि लाइक रियली मेरे इस जुमले ने ये अंजाम दिया है, दिस इज पॉसिबल. आई मीन मेरा पैदा होने का एक किस्म का हक अदा हो गया कि आई एम हियर. आई एम नॉट समवन हु इज डिसेबल्ड जिसको बस बिठा के आपने खिलाना है. आई एम हियर टू क्रिएट वैल्यू. मेरा ये वाला हाथ है, ना मेरा ये वाला हाथ है, मेरा ये वाला हाथ है. ठीक है. एंड व्हेन दैट हैंड हैपेंस, द फ्रेंडशिप्स, द कोलैबोरेशंस दैट हैपन, which is remarkable. You forget what your issues are क्योंकि आप कम्युनिटी के साथ इतना जुड़ जाते हैं, आपका एक नेटवर्क ऑफ पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाता है. कई दफ़ा ऐसे होता है कि आई एम ऑन फ्लाइट या मैं किसी एयरपोर्ट पर हूँ, हम सेम बोली नहीं बोलते पूरी दुनिया में. कोई खातून आएंगी, कहेंगी मुझे तुम्हें गले से लगाना है. Of course, I'm available. Hug me. And then they hug me and then they cry. This recently happened at Doha airport. एक औरत थी, सिक्योरिटी में थी और वो मुझे गले लगा के रोना शुरू हो गई. मैंने कहा बस मैं ऑल द वे दोहा से इस काम के लिए आई हूँ. This was it. And she cried and I cried and we have no idea why we're crying. And you don't know each other. We don't. And it was just like hug, cry, and laugh. Because we never even saw each other. But the relief one feels with that, I think that is the essence of life. मेरे लिए वो happiness है. There are other pleasures in this life
एंड इट्स मोर देन व्हाट we're taught. We're taught कि नौकरी में आपको खुशी मिलेगी, we're taught कि शादी में आपको खुशी मिलेगी, we're taught कि आप बहुत बड़ा कोई इनाम जीत जाए, ओहदे पे आ जाए, उससे आपको खुशी मिलेगी. I completely disagree with that. मुझे ये बिल्कुल भी ना प्रैक्टिकल कभी लगा, ना कभी फील हुआ. यस, आपको वक्ती तौर पे खुशी होती है, बट what stays with you are those moments that you crave, you create, and then you celebrate. Wonderful. Wow, fantastic. What a deep insight you have of life itself. And कितना exposure आपको मिला होगा, लोगों से interaction, दुनिया देखी आपने. आगे क्या आपके goals और objectives हैं? What you see in the future for yourself and for the work you do? सर मुझे लगता है at this point in my life, I think कि अल्लाह ताला ने ना मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दिया. मुझे लगता है कि अब I need to set bigger goals in life. I need to challenge myself on a different level. लेकिन अगर मैं कहूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर दिया तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है. My cup is full. I can say that. मेरा दिल भी भरा हुआ है, मेरा पेट भी भरा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जेब भी भरी हुई है. What do you do with that? You give back. आप अपनी टेबल लंबी करते हैं. तो मेरा अगले 10 दिन के मेरा जो अगला 10 साल का जो एक गोल है, that is to give back to Pakistan. To give back, to work on the grassroots level. जब मैं ट्रैवल करी थी तो मैं एक हायर लेवल पे थी, बोर्ड्स में थी, पॉलिसी की डिस्कशंस थी, लेकिन अब मैं पाकिस्तान में ग्रासरूट लेवल पे काम करना चाहती हूँ. आई वांट टू क्रिएट मोर एनर्जी अराउंड मी कि और लोग मेरे जैसा काम करके मुझसे भी आगे बढ़े. तो मेरा एम है कि अगर आज तंजीला एक है तो अगले 3-4 सालों में 100 से 1000 तक और तंजीलाएँ होनी चाहिए, जो ना सिर्फ ये सोच रखें कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कुछ करें, बल्कि ट्रैवल करें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, दुनिया की खूबसूरती देखें, खाने खाएं, पिक्चर्स में इंजॉय करें लाइफ को. और हम अनफॉर्चुनेटली नहीं करते. रैट रेस बेसिकली होनी ही नहीं चाहिए. अगर कोई जंग या रेस है तो आपकी खुद से है. आपने खुद से बेहतर होना है एवरी डे. एंड आई एंजॉय दैट, चैलेंजिंग माई सेल्फ. यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर एंड आई एम लाइक, तुम जिसको देख रही हो, वुड यू लाइक टू बी फ्रेंड्स विद हर? एंड आई एम लाइक, नहीं, मुझे लगता है यू टू आर्टिफिशियल, फिक्स दैट. देन आई आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन अगेन, वुड यू इवन डेट दिस पर्सन? वुड यू वांट टू वर्क विद दिस पर्सन? तुम इसको हायर करोगी? ये जो है, देखो नहीं यार, तो बड़ी सुस्त है, ये बड़ी सुस्त है, शी इज अ प्रोक्रेस्टिनेटर, आई विल नॉट हायर हर, सो आई नीड टू फिक्स माई सेल्फ. It's a beautiful journey in your own way, Samar. When you discover this universe, और जब आप इसमें तो वीजे की भी जरूरत नहीं है ना. You don't need any visa, you don't need any airline, you don't need any permission. That's it. I mean, जो गैलेक्सी ये आपको मिल गया है ना, क्या बात है इसकी. इसको ही एक्सप्लोर करें. और फिर दुनिया तो एक बोनस है ना, आप दुनिया में भी आ गए. So that is the aim for the next 10 years, to give back whatever I've achieved. आपने सब कुछ सारा जो आखिरी जो सवाल पूछने लगी थी कि टेक होम मैसेज क्या है हमारे नौजवान के नई पौध के लिए, तो सारा कुछ तो आपने कह दिया है. लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट देयर इज समथिंग एक्चुअली आई वांट द ऑडियंस टू नो हाउ all our younger generation, the focus is on the younger generation, because I think they need that motivation, that power, that strength, that vigor which you carry in yourself. What advice would you give to them? जब हम यंग बोलते हैं तो assume we are talking about youngsters in their teenage या 20s. I mean, we never lose the young part, है ना. लेकिन I think ये एज को थोड़ी vulnerable होती है. ये एज वो होती है जब आप थोड़े confused होते हैं. I'm in my 30s now. I can tell you my 20s, my teens, I'm sure you'll agree, but the confused part, you don't know what's going to happen. In 30s, you're a bit more relaxed. Young generation को मैं एक message दूंगी that the best is yet to come. So never ever for a second think कि आज मेरे पास डिग्री नहीं है, पैसा नहीं है, पावर नहीं है, रिलेशनशिप्स का नहीं पता, अम्मी अब्बू से नहीं बन रही, सोशल मीडिया पे पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि दे चेंज देयर अपीयरेंस, दे ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे. आई प्रॉमिस यू कि व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग योर ओन पावर, और जब आप अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करें, और जब आप डिसाइड करें कि मेरी चॉइस है कि आई एम गोइंग टू ईट क्लीन, इट्स माई चॉइस दैट आई एम गोइंग टू स्टे फिट, आई विल हैव बिगर गोल्स इन लाइफ. Okay, number one, there is a power up there who has given me this life. तो क्या वो आपको कामयाबी नहीं दे सकते? आपको जिंदगी मिल गई है, you were born. तो you think you can't get your dreams? Have this faith and get hard on yourself. Be aggressive. छोटी छोटी बात में कीड़े मकोड़ों से नहीं डरना.
कीड़े मकोड़े तो खुद मासूम ले जाए, ये प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में है ये कीड़े मकोड़ों की तरह है. Look at it that And way. they're very petty, and that's Very this petty. saps so much energy from you. मैं बैठे बैठे मुझ में इतनी स्ट्रेंथ आई है, तो हमारी जो ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं अभी उनमें कितनी आई होगी. I have no words to thank you for being such a big contribution today for us at the Happiness Summit. And inshallah, we hope to stay in touch with Yes. you and get more knowledge and more exposure, Absolutely. from you. Feelings are mutual. आपसे भी मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है, and I think you have so much to offer. You are a model mother, someone who works and takes care of the children. I think we need more examples in visibility today. Thank you so much, Tanzila. Thank you. Thank you so much. Allah Hafiz.